Hello kids, welcome to today's maths class and today we'll do geometrical shapes. So हम अपने अराउंड बहुत सारी चीज़ें देखते हैं एंड हम देखते हैं कि उन चीज़ों के अलग अलग शेप है, हर चीज़ का अपना एक डिफरेंट शेप है. बॉल है तो वो गोल है, टेबल है उसका अपना शेप है, डोर का अपना शेप है. तो इन शेप्स के बारे में चैप्टर में हम पढ़ेंगे. फर्स्ट विल स्टार्ट विद द वार्म अप एक्टिविटी. Line drawing of various object given. You can tell how many standing, sleeping, slanting and curved line are required to make them. Like here, standing line कितनी चाहिए? 4 standing line. Sleeping line, standing line, these are the standing line, these are the sleeping line and these are the slant line. Clear? तो इस तरीके से आपको शेप देखना है एंड नंबर ऑफ लाइन बताना है. कर्व लाइन, कर्व इस तरीके से हो सकती है. नेक्स्ट इज ऑब्जर्व द ऑब्जेक्ट. Each of these object is of the shape of the cuboid. So, these are called the cuboidal object. Cuboid with the equal faces and equal edges, that is called cube. Cuboid जिसमें सारी faces equal हो, edges equal हो, वो क्या कहलाएगा? Cube. So, dice, gift box, all these are the example of cube. जो cuboid होगा उसमें 6 faces होंगी, these are the faces. These are the faces. Total 6 faces होंगी. Edges, these are the edges where 2 faces meet. And these are the vertices. Clear? So total 6 faces, 12 edges and 8 vertices. Observe the shape of the object given below. अगर हम इस ऑब्जेक्ट की बात करें, each of these object is the shape of sphere. Hence, these are called the spherical object. The sphere has only one face only. एक curved face होती है. The sphere does not have any edge or any vertex. जो sphere होता है उसमें कोई edges नहीं होती, कोई vertex नहीं होता. Example cricket ball or football. These are the example of sphere. Next, observe the shape of the object given below. Each of these object is the shape of cylinder. So these are called the cylindrical object. Cylinder has 3 faces, this curved face and 2 flat faces. Clear? Cylinder have 2 edges and it has no vertex. Clear? So यहाँ पे आपको edges दे रखे, 2 edges होंगे and no vertex. Next, look at the following object. Each of these object is the shape of cone. So these are called the conical objects. Like diamond है या cone है, ये कैसा है? Cone shape का है. So these are conical object. It has 2 faces, one is this curve and one is this flat face. And it has 2 faces, it has 1 edge. एक edge होगा and 1 vertex. This is the vertex and this is edge. Next, plane and curve surfaces. The surfaces of all the 6 face of the cuboid are plane surface. जितने भी cuboid की जितनी भी faces होती है वो क्या होती है? Plane surface. But the surface of the sphere, one surface of the cylinder and cone is curved surface. ये जो surface है ये कैसे होगी? Curve होगी. All the edges of the cuboid are straight edge. The edge of the cylinder and the edge of the cone curve edges होंगे. Straight and curved line. This is straight line and this is curved line. Clear? So ये क्या होंगे? Plane surface होंगे. And these are the कर्व एजेस. ये जो एजेस हैं वो कैसे होंगे? कर्व होंगे और इसके प्लेन होंगे. प्लेन फिगर की अगर एग्जाम्पल लें, रेक्टेंगल, ट्राइंगल, स्क्वायर एंड सर्कल, ये प्लेन फिगर के एग्जाम्पल है. नेक्स्ट इज प्रैक्टिस टाइम 11. फिल इन द ब्लैंक्स. नेम द ऑब्जेक्ट. स्फेयर. स्फेयर हैज ओनली 1 फेस, नो एजेस एंड नो वर्टेक्स. क्लियर? रियल लाइफ मेजरमेंट. Fill in the object used seen in daily life. Name of 2 cylindrical object. 2 cylindrical object, bottle, tube light. You can write any 2 cylindrical object. Next, multiple choice questions. A cuboid has dash faces. So a cuboid has 6 faces. So C is the correct option. So यहाँ पे हमारा चैप्टर एंड होता है. I hope आपको समझ में आ गया डिफरेंट शेप्स के बारे में. नाउ यू टू प्रैक्टिस दिस चैप्टर.